So, okay, as usual, in the chat box, you write your name and enrollment number. So in the end of the class, I will copy all the chat box details. Okay, so shall I start? Sir, am I audible? Hello. My sound is clear? Yes, sir. Hello, sir. Okay, sound is clear, na? Yes, sir. Yes, sir. So, okay, just today we have to see our unit number 3, block 1. Again, it is a matrix, but in a different formation, different type. So yesterday we have discussed determinant and matrices, some of the types, especially in the grammar rules, inverse matrix, and reducing process. We have seen a lot of things. So yesterday, actually, some of the queries, actually, I gone through the chat box. Some of the students requested, 1 or 2 students. What is that one? A minor and a cofactor. So maybe still they are some doubtful. So okay, that I will clarify, no problem. So yesterday actually I've given some homework. Have you done this or not? Yes, sir. You do it. Okay. Okay, let's see. So anyway, I think straight away I'm going to the sharing mode. Then that is the better, because by the time if you have something you can write in the chat box, no problem. So your roll number and things should given. Okay, try to give it. Fine. Okay, that I'll
see. No problem. So now I have to go for sharing mode. So now today is unit 3. So try to carefully listen all these things. If any doubts, we can discuss later on. So first I try to go through the in the units, what are the syllabus or courses are there, and type of questions. These all are exam question basically. And in your study material also it is available. Some of the solution are also available. So here you see some matrix is given. This row equivalent to the matrix. So you have to see prove it, and B is equal to B matrix is given. There are two matrices. You have to prove it that A matrix are equivalent to Hello, B sir. Sorry to interrupt. Tell me. I hear so many background noise now it's coming from you, I think. Background noise from my side. Yes, sir. But I don't know. Yesterday the same setup. Maybe the ceiling fan. Maybe. Let's see. Maybe the sound is little less. Now the sound is little less, no? It is clear now? Yes, sir. sir. It's clear. I can hear you. Okay, maybe from the fan itself, sound is background noise. Okay, anyway. Better if you have some lead, I mean headphone, to try to listen, then it will be very clear. Otherwise, the noise will come more, is it not? Anyway, first, what are the matrices given? We try to reduce it. Now, first of all, before start, I can tell you what is the process. The reducing process, main aim is there. You have to formation of triangle. You see this side 0, 0 and 0. It is form of triangle. So once you make it, you try to make it 0 and make a triangle. I mean, in the first column there are 2 zeros, and in the bottom is also. I mean, it is if you form a triangle in this side or in the upper side, any corner, then your problem will solve. Idea is ultimate aim unknown value. Suppose, for example, I can say y, because it may be in your mind. So why, sir, you are doing these things? Why in the 0 we are making the 0? Why? What is the purpose of this? Because so all are basically the data. When you are going for the computer programming or as analysis, data analysis, all these things, so you have a huge data. The data are a lot of imperatives there. You know that the data is not real data.
You have to identify the data, and there are a lot of unknowns are also there. How to segregate it? So better if we have a process to segregate the things, then it will be very easy to identify the correct values. Idea is, suppose for example, first column we can represent is a x, second column we represent y, and third column we represent z. Okay. Now in this case is all are numerical values, so no problem. Suppose somewhere x is there, z is there, or lambda, whatever it is there, some unknown values are involved. So that case, if you there are three equations, linear equation. Suppose the one equation first row, second equation second row, and third equations. So within this equation, if you nullify, if you reduce the sum of the elements and the side of corner, so in this case, if you see, it is a corner all are 0. It means in the bottom 0 means in this case x value, y value, and here is z value is not here. So within these values, easily you can identify the x value, y value, and z value. That means for the solution it will be very easy. Suppose it is not 0, something is there, then you will be very complicated. You don't know what to do. How to reduce how to calculate the x value, how to calculate the y value, how to calculate the z value. It will be very difficult, very tough process will be there. So you should have some process where you can reduce the values. For example, for here you can see, just for example, suppose I can write it here, 1x plus 2y plus 3z. Let it be like this, okay? And here is minus 3y minus 3z. Suppose some unknown values we are adding here, and here is nothing is there. So within this equation, by the solve, you can easily identify the x value and y value. If you find out the x value, then that value you can put it in the other equation, and you can identify the z value also. As well, normally in the algebra we are doing like this. If you cannot simplify the things, simply we can minus, plus, addition, deletion, whatever the way, you can x value you can put it in the other equation, and finally we have derived the y value. Here it's also same thing, the matrix process. So if you try to reduce the sum of the elements, then other identification of the elements will be very easy. So that is the purpose behind it. I hope I can clarify the things. So so that's why if it is in your mind, so this is the purpose of this. Anyway, so if it is that our target is to formate a triangle, so then definitely we have to, all these processes are to be started. So first here you see, your target 4 should be 0, because if we x element, if we put in a make it 0, then at least somewhere within the equation we can reduce some of the things. So make it 0. Suppose 4 is here, so definitely you have to multiply the first row with 4, then you minus it and you will get the 0. Simply here it is doing here. Again I am telling you, to change the R2, I mean the row, ultimate aim is here 1 0 should make it, because our idea is you have to make a triangle. So first you target this one, then you target 7 to be 0, then you target 8 to be 0. So do so, you have to reduce this process by multiplying the 4 or something and 7, because 7 is here, so you have to multiply the R. So ultimately you have to get it. So this is the basic idea. For example, suppose here not 4, it is a 5. Suppose 5 is here. So definitely you have to multiply by 5 into R1. Then only you can minus it and you can get it, the 0. For here, instead of 4, now it is 6. So definitely
to make it 0, you have to multiply 6 into 1, then only you can get 0. So this is the way actually, simply. I hope I can explain the things. Nothing else. Actually, you try to understand the purpose. Once your concept will be clear, what we are doing and for what we are doing and what purpose, then it will be, then, but the other things are only the practice. Okay. So next step. So that way you see one by one, it is they are making 0. Once it is making a 0, then we can say it is equivalent to B. So ultimately, this part is same. So this part is same. So here you can straightway you can write the matrix B is above example is a triangular matrix because it is a formation of triangle. So it is triangular matrix. That's all. Actually, this type of example solution is very easy. Only the practice is required. As soon as you see the question, if you are in your mind, you have to make it 0, 4, 7, 8 to be 0, make it 0. Then you can do it accordingly, no problem. Whatever the figure will give it no problem. Now in this here is 1, 2, 4, 3. That's not me. I don't know. Here. So now you can see the some other. I will show you another example also. Just try to understand. Try to understand. Try to understand the things. And another example, you see this one. Same thing, but here is a order of 4. Here in this case, order of 3. Now it is order of 4. In case of order of 4, it will be a little lengthy because another row is there, and the last two you have to make it a 0, and other things also 0. So slowly you can see by the application of these things, you see how make it a 0. So triangle. It is again idea is make it triangle. By apply, always you have to write in the right hand side by applying R3. What the things that you are doing, that you have to apply it. I think, let's see. Oh, nothing is there. Okay. Okay, so then you see the another one. Same thing. Here also you see the triangle formation. So 6, 5, and 7, your target is to make it a 0. Okay. Once you make it a 0, then unless you try, because you see, only you have to stop when on the corner is formation a triangle. When the triangle is formation of 3 zeros, then you can stop here. Then further reducing is not required. Where actually you can declare is a which is triangular matrix. Only thing is here you see, try to reduce the small elements, because you see in this case minus 16. Okay, minus 16, 7. When the big elements are there, you try to reduce it. Sometimes students are not doing this part. Straight away they are targeting the 3 zeros. Okay, finish. But it is a good practice. You have to reduce the big elements. So try to, nothing else, simply you divide it by 16. In this case, divided by 7. So it is now reduced already. 1. So try to be 1, 2, 3, like this. So similarly here, minus 11 last is not possible. Okay, once you make it a 3, then no problem. So this is the way you have to go through this.
And how to do it, all these things, that it is your calculation only. It is not a very, very big calculation is not there. Simply you divide it. Find now coming to the rank matrix in your chapter. I just show you some of the main questions, solutions. Then I have to show more and more solution also. So rank matrix is there. That matrix, what is the rank of this? Means their ranking. That is a two rank is 2 or 3 or 4. How to derive it? So you have to determine determinant. You have to first find out the determinant. If the determinant is 0, then definitely it will be reduced 1. I mean, in this case, you see there are. It seems to be a 3 rank. A is equal to 3. Rank is 3, should be. But if the determinant is 0, then the rank will be 2. If it is not 0, then you can say rank is 3. 3 only. Because it is in the 3 order. So it is related to, rank is related to your determinant, and it should be, if it is a 0, then you can reduce the. Suppose, for example, this one, you see the determinant is 24, not 0. So rank is 3 only. A is 3. Rank is A is 3. Hence, the rank of A is 3. Suppose it is not 24, it is a 0. The determinant is 0. Then you can say the rank of A is 2. That's all only. So determine the rank of matrix. Sir. Yes. Tell me. I have a question that what is the rank of a matrix? I can't understand that. That's what I'm telling you. No? The rank is actually the position of the matrix are saying which rank here actually. It is basically the time of programming or something. You have to see the ranking, that it is a priority basis. If it is a priority, that what are the data is coming when you are making the matrix formation. The data basically in the computer, what happened? You are arranging the data only, is it not? And particular program, particular software or something, different applications. So you have to prioritize the data when you are so that's why the ranking are coming. If you state with this determinant is 0, the rank is 2. If it is not 0, so you can easily identify the matrix quality. Okay, that is the purpose the rank is required. Which rank the things? It is not in the army, the colonel and lieutenant colonel, the different rank is there. In the matrix also different lot of ranking are there. Okay, that you can see in later on. I can give you some of the more example of rank, and some of the theorem also, theory also I will give you. Okay, anyway. So ranking in this case, you see what happened. After this, this determinant is -12. Oh, -12. So the rank of the reduced matrix is -12. So we can say rank is 3 only, because whatever the elements is there at the time of determination, because you see it is again the calculation by the determinant only. Determinant can only identify which rank, not matrix cannot do anything. You see up to here, that is a matrix. That matrix we are just reducing, and finally you have to formation of these formations. Once we have taken this formation, then it is a non-zero, because it is not non-zero. If you see another part is also then the rank matrix, there are any 4 or sub-matrix. Actually, these are all sub-matrix. Suppose 1, 2, 0, -12, that is one of the square matrix. We can say it is a sub-matrix. Means there is a main matrix, and within this some sub-matrix. And again, the multiplication of sub-matrix at 0, then again it should be a non-zero, because it should be a non-zero in the case of identify the rank.
So many other conditions are there that I'll tell you. But in this case, you see the determinant is -12, so it is not 0. So we can say the rank is same. But I mean, what are the in order of determinant? Same is the rank. So order of determinant and the rank is same in case of non-zero. Okay. Now see the another one. If you see more and more example, it will be more clear. In this case also, finally you can see where we are. So using the determinatory, this part. Okay, okay, I can see the some another example. See some of the example. Your syllabus is very vast syllabus, but you have to point out the some of the pattern of the question also last 4-5 years. At the same time, when you are going through the units, you see the important parts. At the same time, you just follow the pattern of the question paper. Which units are very important? You can easily identify this is the unit where the more and more questions are coming. So you have to focus on particular that units. That is the idea, because if you want to score more numbers, so first of all you have to try to cover up the syllabus and see the where the important questions are coming from the chapters. Then after that you go in deep. Deep means if you want to learn more particular things, then you can go ahead, because time is very short. Within a first semester there are 4-5 courses are there. Time is also very less because you have to go through the things, and online classes are not sufficient for you. You have to go through, and then after that, first of all you try to cover up the syllabus, then your confidence will be more, maybe around 50 to 60% your knowledge will be gained. Then slowly, then one by one chapters you go through this. Wow, this is the area you lacking, but this is the area not strong. This is the area more important. Hard work is required. So this is the way you can point it out and go through this. So especially in the rank matrix, I can say you very few questions are coming, and sometimes it is not coming also in the exam, and very simple type of things. So that's why I'm not going through the details of these things. Actually, there are a lot of classes. There. Sir, Yes, then I can show you. okay. If the determinant of the matrix is not 0, then it's a rank. Then the rank of the matrix is 2, a 3. Yeah, because just one order is less. Because one it is less. Suppose, for example, your determinant is 3. For example, there are 3 orders. If it is 0, then definitely A is equal to 2. Just one order reduce. You can remember in that way. Suppose there are 4 orders of determinant. If your determinant is 0, order means even a matrix formation. There are row and column are 4. A row and column is 3. A row and column is 2. That is why I am telling you the order. Which order is there? If the determinant is 0, simply you just -1. Whatever these things. So this is your rank statement. That you have to prove it. I mean, first you have to derive the determinant. You have to show the determinant is 0. Then you can, in the conclusion, you have to write it. That's all. It is sufficient. Okay, sir. So there is only 2 ranks. One is rank 2 and rank 3. No, rank 1 is also there. It is there. Then, sir, Because that, no, I mean, that is different cases. Actually, that's why I'm telling you. If you want to go deep, then you have to see a lot of numericals, around 7 to 8 type of numericals. Then only you can understand all these things. For your purpose, I'm just giving you some of the clips, some of the solutions, which are the exam pattern. That's why I'm telling you. If you separately want to know all these things, you go through the study material. There are how many type of ranking and how it is. Then slowly you can go through this. If you stuck up or if you're not understanding, you can call me. You can WhatsApp me. I will
definitely go through this. Because I can then in the rank matrix, I can take you one full class, 1 hour class, because there are vast things are there. Every in the determinant also very lot of in the books is there. There are 100 pages only determinant. You cannot. It is so developed in the mathematics where only 4 or 5 pages are in your syllabus. You understand what I mean to say? Vectors also there are 300 pages vector books are there. Those who are in the studying in the engineering or something in the studies. So there are huge things out there. In your BCA course, there's a basic mathematics where you have to understand the concept of the formulas, where the application, and as per your computer science, which are the required. You understand? If you want to go further, definitely I am with you. We can discuss later on, no problem. Okay? Because here actually my idea is focus on the exam pattern and you're covering the syllabus and it is a counseling classes. If you have any doubt, we can discuss it. Still, I am trying to cover up your syllabus so that you can have an idea and you can go through the books and then you will be more interest will be coming. Okay, this is the things are there. Okay, sir has told this is the techniques. Okay, then your interest will be more. My idea is like this. Otherwise, that your hard work, आप जितना मेहनत करोगे उतना आप सीख पाओगे. Is it not? Is there no end, na? Anyway, let me show some of the other things. Because if you go through the study materials of your IGNOU, that is sufficient. The law, everything are given. Sometimes more examples are there, somewhere some example is very less. So that is the thing. सर इग्नू का स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम यह है कि कई जगह गलत गलत दिया हुआ है सर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सर. उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, एक दो होता होगा, बट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पार्ट इज ओके. एक्चुअली फिगर में सपोज 1 का जगह में 0 हो गया, 0 की जगह 1 हो गया, 2 हो गया, दैट इज देयर. एक्चुअली आई हैव आल्सो सीन सम ऑफ द प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर, बट इट डजंट मीन कॉन्सेप्ट आपको गलत होगा. वो तो आप करेक्ट वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, या करेक्ट कर लो ना, उसमें क्या है, तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो हो सकता है ना. जी सर. Yeah, that is the technique. Now, देखिए, if you are able to identify the mistake of printing, that means you are expert in mathematics. आपने समझ गए तब तो. अगर आप पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ नहीं हुआ, आप रटा मरे जा रहे पर्टिकुलर उसी लाइन को, सेंटेंस को ही, तब तो गलत बात है ना. आप श्योर हो जाओ ये फॉर्मूला है और इसमें ही बैठेगा, यही आंसर होना चाहिए. आप भूल जाओ मैम स्टडी मटेरियल को, पर्टिकुलर जो कहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. यू कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, इज इट नॉट? Okay, anyway, I can show you another study things. Okay. कहाँ चला गया हम लोग? हाँ ठीक है. नाउ अभी मैं इसमें आता हूँ और कैन शो. अच्छा, बिफोर दैट मैं यस्टरडे भूल गया था आप लोगों को देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ द थिंग्स इट इज रिक्वायर्ड वेरी मच. ये मैं आपको मेल कर देंगे. आई विल गिव यू इन द व्हाट्सएप मैसेज और समथिंग. कल मैं दे नहीं पाया था, दोनों इकट्ठा मैं सारे दे देंगे आप लोगों को. सो ये आपको फॉर्मूला एक जगह में आप एक पेज फोटोकॉपी लेके आराम से आप टेबल में चिपका दीजिए और रख दीजिए, आपको सारे काम हो जाएंगे. देखिए मैं मिला था, मेरे को लगा ये इम्पोर्टेंट है. देखिए इसमें सारे अलजेब्रिक फार्मूला है, जितने सारे फार्मूला है ये आपको काम में आ जाएगा पूरे के पूरे. इतना ही है, इससे सफिशिएंट है. इतना जितना फार्मूला इसमें दिया हुआ है अप टू 12 अलजेब्रिक पार्ट इज सफिशिएंट. ओके, नाउ कमिंग टू फैक्टर फार्मूलाज. दैट इज फैक्टर फार्मूलाज ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स, सो इट इज सफिशिएंट. Then it is very much required. Law of Sarts is also not very much required. Sometimes it is required, so that also you can keep it. Sometimes it is required. ये बड़ा important है. The rules of operating integer sign. Most of the students जिसका practice नहीं है, not in practice, ये आपका
मैक्सिमम मैंने आंसर शीट में देखा एग्जाम के बाद, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क आ जाता है एसी में ही। सर सब कुछ ठीक ठाक किया, बस साइन में गड़बड़ कर दिया। तो ये आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हम लोग चाइल्डहुड में सीखा था क्लास 4-5 में, ये आपको एक बार याद कर लीजिए। स्पेशली आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या करें, मैंने मेरी प्राइस नहीं नकला, अभी भी स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाता है। यस सर, अभी भी कंफ्यूज है इसमें सर, थोड़ा हाँ, ड्राइव कर दीजिए। कई बार -5 इंटू -3 क्या करें, माइनस साइन लगेगा ना प्लस लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये आप प्रैक्टिस में रहेंगे और आंखों का सामने रहेगा, गलती नहीं होगा। बट हमेशा इसको देख देख के मत करिए, तो आपको आदत बन जाएगी, फिर इसको देखना ही है एक बार, ऐसा नहीं करना। 1 और 2 टाइम्स देखिए, इसको याद कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ये आपको रिमेम्बरेंस हो रहा है कि नहीं, तो उसके बाद आपको इसको देखने का आवश्यक नहीं है, आदत बन जाएगा, आपको फटाफट हो जाएंगे। तो ये एक बार शुरुआत में आप एक बार रीड आउट, जस्ट गो थ्रू दिस एंड कीप इट। एंड बाकी और भी कुछ फार्मूला, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, some of the formulas are there. This is very much not required in your course. And quadrant I think you know, complex chapter में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लासेस में आपको आ जाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट जब ये कल मंडे ट्यूसडे क्लासेस में जरूर इसको जरूरत पड़ेगा। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। Then circle, then not very much needed. Then your sum of series, yes, ये important है, हाँ ये आपको important है। These things, natural numbers के ये हुए आपको important है। This is also important, ये सारे important। अभी जो मैंने सारे बड़े बड़े में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में, ये सारे आपको important है। Then laws of indices, this is also not very much needed. Profit and loss is not required, but you can keep it for future. Percentage values, sometimes for any competitive exams, it will be very easy for this. आप लोग को आज नहीं तो कल तो competitive exam देना ही है, so कई बार percentage निकालने में दिक्कत होता है, so that is also needed. So in one place, law of operation of sign, ये हम लोग वर्ड मास ब्रैकेट का काम कौन सा आगे करना है, कौन सा बाद में करना है, थर्ड ब्रैकेट का काम कब शुरू करेंगे, ये अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। एक फार्मूला होता है जो वर्ड मास, तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम कैसे करें, सेकेंड ब्रैकेट का गुना आगे करे ना भगा आगे करे, ये कंफ्यूजन अभी भी रहता है। अगर आपको ये याद रहेगा BODMAS, तो आपको ब्रैकेट, then you have divisions, multiplication, additions, so that step by step आपको करना है। Division algorithms, so then your simple interest formulas, properties of binary numbers, ये आपको काम आ जाएगा BCS-11 में, BCS-11 में काम आ जाएगा। Then your number systems, okay, then your trigonometry, some of the things are there. Quadratic equations, yes, it is required in your complex numbers, and here some of the chapters are required. Then your ratio and proportions, not very much required. So that's all. So these slides जो है this file में आज ही भेज देंगे, as soon as the complete session I will send it, because all formulas are given. ये वाला जो है जरूर ध्यान से याद रखिएगा, आपको पर्पस हो जाएगा। सो ओके, आई कैन क्लोज दिस वन, इसको बंद करते हैं। देन आई कैन टेल यू, ये वाला हो गया, देन मैथमेटिक्स फार्मूला हो गया। नाउ
ये कौन सा देखते हैं? हाँ, इसमें actually the printout is not very clear, so I can read out the things. Good quality of ये में scan copy I will send you later on. Right now I just read out, you just listen it. Minors and cofactors. Yesterday some of the students queries tha, what is the minors and cofactors. So we shall now define what are called minors and cofactors of elements of a determinant, particular one determinant, that determinant minor, how to calculate the minor. So actually you cannot see it very properly. I can show you something. Anyhow, that is the determinant A11, A12, A13. That is the first row. The second row 21, 22, 23, and 31, 32, and 33. This is the way it is organized. So if we leave the row and column passing through the element Aij, Aij means first row and first column, I and j representing the row and column. That's all. So Aij, so considering this element A11, if we derive the minor of this particular element, just remind it, and what I mean to say, minor of this first element, again I am repeating, minor of first element. So minor क्या हुआ? Basically वो element से जुड़ा हुआ. That again element किसके साथ जुड़ा हुआ है? Determinant. So determinant को आप दो पार्ट करें तो एक पार्ट हो गया आपका element और element के अंदर में आपका minor. So that we have to identify the minor of this particular element. So this is the way you can see it. Then finally, how to better you can see the example. Suppose the minor of the element A21. A21 कहाँ है? Second row, first column, means this one. Suppose so A21 element minor निकालना है. So क्या होगा? As per the rule, आपको row and column जहाँ पर touch किया passing through the A21 उसको आप गायब कर दीजिए. Row and column गायब. So remaining जो portion है वो रख दीजिए. Now we can give a rename. So we can have minor 21. This is be A21 minor 21 means A21 is the element of particular determinant. Would determinant, this is determinant, this is element. This element का minor क्या हुआ? This is minor M21. Similarly, element A32. This is your determinant, the new determinant, and finally E आपका आ जाएगा minor. So nothing, basically determinant और minor में determinant निकालना minor निकालना से एक ही part, but it is a separate part by part element को हम लोगों ने किया. Overall determinant, it is a overall determinant A mode, overall determinant. Then again it is a part of element का भी determinant minor हम लोग निकाल रहे हैं. When you add it total, then we calculate it. So ultimately we can get the. So minor is nothing. If we multiply the expand the first row or column wise, so you will get multiply the element into minor. So if you multiply it, then we can get the result. Ultimate determinant we can get it. So this is the actually the notation. It is some sort of notation is there in bracket -1. Then in the top 1 plus 1. 1 plus 1 nothing else. First row, first column means suppose this is A11
दिस A11 इनका जो नोटेशन हम लोग डालेंगे, दैट इज योर -1, दैट इज 11 जो है ना 1, इसको 1 + 1 कर दीजिए बस, सिंपली 1 + 1 ऊपर में. Then again you can write it this portion and minor M11 plus again -1, notification आएगा ही. Then next is 1 + 2 means A12, second element of first row means this one. Now we are talking about the first row. So first row, pehla element these things, second element this thing, third element like this. So here I only see the changes are, what are the changes are coming? 1 + 1, then 1 + 2, then 1 + 3 is coming. So इसको आपको इतना याद रखना जरूरत नहीं है, because the 1 1, so 1 + 1, there 1 2, that's a 1 + 2, there 1 3, so 1 +, simply आपको एक पास डाल दीजिए, आपको याद आ जाएगा. ठीक है. And sign in this case you see ultimately because it is a 2 square, a -1 को square करेंगे तो ultimately you have to get it plus only. So A11 M1. In this case you see 1 + 3, so -1 cube, so minus -1 ही होगा because cube जो है odd number है. Even number always plus स्क्वायरिंग हो जाता है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, हाँ 6 स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग होगा तो अल्टीमेटली माइनस सिंबल भी गायब हो जाता है, सो प्लस हो जाता है. इन दिस केस इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज 1 + 3 क्यूब, क्यूब होगा तो माइनस साइन मिल जाएगा. नाउ इन दिस केस 1 + 4, तो इट इज 4, सो स्क्वायर इजीली you can square it up. Okay, so it is plus, so that way you can remember it. Similarly you can column wise also you can do it. Now cofactor, now you can choose cofactor क्या है, माइनर तो चलो ओके क्लियर हो गया. ठीक है. Now cofactor is क्या होगा, माइनर जो MIJ वो मल्टीप्लाई करना. What are the minor we are getting? The minor is just simply multiplied by -1 I + j is called the cofactor of the element aij. If you remember this thing, you can clarify the minor or cofactor. What is the difference? Simple thing. Whatever the minor is there, you just multiply by these things. So आपका cofactor हो जाएगा. So we shall denote the cofactor, the element by the corresponding capital letter C. Capital letter C से denote करता है, sometimes A also, but C whatever it is. So in capital word, somewhere in the books you can see C लिखा हुआ, C11, C12. Some of the books are written A21, A32, same thing. So all are cofactor. So better C लिखिए क्योंकि cofactor का पहला word C है, so you can maintain the C. Most of the books is written is C only. Some foreign books are written A. Okay, doesn't matter. So example देखिए, इसमें आप क्लियर हो जाएंगे. The cofactor of element A21 is equal to A21, capital A21 is equal to, इस जगह में आप लोग लिख सकते हैं C21 लिख सकते हैं, C11 कर सकते हैं, C32, whatever type you can write it. Here is -1 notification पे आएगा and 2 + 1 and M32. Simply इसको multiplication. This is the condition, is the cofactor of the element distance. Earlier क्या था और minor में क्या difference is? Minor के time simply आपको M21 लिखा होगा, M21, M22 like this. इसमें कोई multiplication part नहीं है, इसलिए आप मैट्रिक्स में देखे होंगे कंबाइन किया हुआ, माइनर और कोफैक्टर साथ में जोड़ दिया गया.
That's why your confusion minor क्या है, cofactor क्या है. But it is a difference. Difference are there. So anyway, I think now it is clear now. For example, now write a cofactor of the element of the determinant. Suppose this is the one determinant is there. To try to find out the cofactor. Simply, that is A11 cofactor of the element 2. A11 is basically this area. This is the element here. This element is 2 is given. So in respect of 2, we have to identify the cofactor. तो 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली 4 6 -1 8 2 डालेंगे, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं. सेम थिंग, ओनली थिंग एट द टाइम ऑफ कोफैक्टर element will not come. That's all. That is the difference. So cofactor of this element is this, ultimately 38. So we can write cofactor of 2 element is 38. Okay. Similarly, cofactor of 3 element is 13, -13. Okay, -13. So that you have to see कहाँ plus आएगा, कहाँ minus आएगा, like this. So that is a cofactor of 1 3, third element, this much. So this is the way you have to do it. I hope minor and cofactor yesterday जिन लोगों को confusion था, now it has clarified or not. I hope. I forget the name of the students who wrote me yesterday in the chat box, minor and cofactor. So okay, this is another reducing process. Some of the things, and the exam it has come. Reduce the matrix given below to the normal form and hence find the rank. Again is the find. पहले इसको normal form में लाना है, and then you have to identify the rank. This is one of the matrices given. First you have to reduce in the normal form and then identify the rank. Okay. So first the question you have to identify the what the question wants. Question चाह क्या रहा है. Then you can go through this. So simply as per the rule you have to आपको 0 0 0 बनाना है और identification normal formation लाना है. तो normal formation means you have to put diagonally 1 1 identifications. Identity matrix में convert करना है. Slowly देखिए identity matrix में आ गया. So most of the cases are zeros. जितना हो सके reducing. You do it normal. इससे ज़्यादा हो नहीं रहा. Okay. So this is the normal form of A, and in this case you see the rank is 2 because one of the portions are 0, and if you find out the determinant, that determinant is 0, because if you identify the determinant of these things, so it is 0. So that's why the rank is 2, not 3. That is another case of things how to reduce the thing. Most of the cases rank is same, but here rank is 2. Okay, so now another things. Okay, yesterday I given some किसने किया है इसका? Yes, sir. So what is the result? 21 सर. तो डिटर्मिनेंट तो दिखाई दे रहा है 21. वो तो ठीक है, देख के बता दिया तुरंत. आगे अब तो इनवर्स निकलना है ना. यू हैव टू इनवर्स पूरा बताओ.
सर फर्स्ट वन 2 स्लैश मैं आगे स्क्रॉल करने से पहले जानना चाहता हूँ क्या आंसर होगा बताओ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। Actually, my idea is giving you more things so that you can do something. So doesn't matter. आप कर लेना, कोई बात नहीं। Just ए see इनवर्स the सर ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स में 2/21 देखते हैं मेरा क्या आंसर आया, देखता हूँ। ऐसा है क्या आपका आंसर? मैं मैच करा लो, देखो। This is the answer. यस सर दिस इज माय आंसर Okay, those who have not done, just go through these. First simple thing I just given you example. That is find the inverse of matrix. The last time question paper में आया था, last time just come in the exam paper. First you make the determinant. First element 1, then 3 1 1 2 as per the rule, then -2 second element, minus symbol आएगा, minus, plus minus, then plus 5. So first you write it in the exam. First things you put a determinant symbol, then equal to, then gap 1 2 3, and so you just give a gap. First you write state 1 2 5, थोड़ा गैप देके 1 -2 5 लिख लो, फटाक से एकदम। देन यहाँ पर एक डंडा खींच दो, गैप देके। just put a one bar line, another line, so total 6 लाइन्स आप खींच दो। देन वो झपाझप जितना सारे आपको अंदर वाला चीज है फटाफट उतार दो, आपको बहुत क्विकली जल्दी हो जाएगा, आग बंद कर। put a one scale here, इसको ढक दो, जो वो दिखाई दे रहा है। अगेन -2 का टाइम जस्ट स्केल को इधर शिफ्ट कर दो, कभी भी गलती नहीं होगा। देन 2 जो दिखाई देगा 2 -1 1 -2। अब व्हेन यू कवर इट अप, आपका आंखों में जो दिखाई दे रहा है सीधा यहीं पर भरो, खत्म। देन 5 स्केल, इधर एक स्केल डाल दो, इधर एक स्केल डाल दो, सीधा जो दिखाई देगा वो आपको इसका खांचा में डाल दो, खत्म। सो दिस लाइन इज वेरी इजी। Only your technique is you have to write fast the elements, then put a gap and on the lines, and whatever the things are coming after the leaving the portions, row and column, you put it. Then simply you multiply it. At the time of multiplication, you have to be careful. You first principal diagonal, you have to first multiply right bottom to left top, and then left. Sometimes students are doing left and then right. No, it is wrong. So anyway, wrong मतलब के अंदर रिजल्ट कुछ उल्टा पल्टा हो जाएगा और क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर आएगा। सो ऑलवेज केयरफुल, राइट डायगोनल जो है वो आपको फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करना है 3, जब 3 × 1 3, देन माइनस सिंबल आएगा, देन 1। सो दिस इज द प्रैक्टिस। देन यू राइट द कोफैक्टर्स। Cofactor just now we discussed. This is the formula, -1 square, because it is 1 1, तो 1 + 1 2, हम straight away 2 लिख दिया। अदरवाइज you can write 1 + 1 लिख सकते हो, जो इधर है सेम थिंग आप इसमें लिख दो 1 + 1, and this portion is coming straight away। अब इसको गुना भागा करोगे तो 2 आ जाएगा अल्टीमेटली, 2, because when you are squaring the -1, ultimately it is a plus, so it is 2। Then second element 1 + 3 1 + 2, so 3 हो गए। then your जो भी आएगा अंदर में, then 1 + third element 1 3, then that is 4, then 1 + 3 is 4, so coming now। So this way you can see the first element, second element, third element, first row, second row, first element, second row, first second row हो गया। जैसे ऑलरेडी मैंने छोटा डैश नीचे डैश लगा दी, सो दैट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा जो डिटरमिनेंट का जो पोर्शन है। टोटल 9 होना चाहिए, इधर टोटल 9 कोफैक्टर होना चाहिए, 1 2 3, अगेन 1 2 3, इधर नीचे 1 2 3, तो हो गया।
total 9 मिल गया. So this is your now adjoint A, because we have to derive the inverse na, so inverse का formula these things. So A inverse is equal to 1 by determinant adjoint A, यही formula है. तो adjoint A तो आपको determinant तो निकल चुके हैं 21. adjoint A हो जाएगा, जो कोफैक्टर निकलेगा वो कोफैक्टर को आप ट्रांसपोज कर दीजिए. यार एक्चुअली स्टेट वे हम ट्रांसपोज कर दिया, रो वाइज नहीं लिखा, कॉलम वाइज लिखा. इसमें जो रो वाइज है, यू सी इधर रो वाइज है फिगर, आपको 2, 3 एंड 5. द 2, 3, 5 मैंने कॉलम बना दिया. 2, -3, 5. What are the in the row wise? Now I convert it in a column wise. 2, -3, 5 straight away I have written here. अगर चाहे तो आप यहाँ पर और एक लाइन बढ़ा सकते हैं. आप सेम थिंग लिख के आप इधर टी लिख दीजिए, टी देन इक्वल टू, देन कन्वर्ट कर दीजिए अगर आप चाहें. पर अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट वे लिख सकते हैं. एडजॉइंट ए इज ऑलरेडी ट्रांसपोज्ड, सो ऑलरेडी ये ट्रांसपोज किया है. रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया. मे बी समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज, सर 2, 3 एंड 5 तो इस तरफ लिखा हुआ रो वाइज, ये उल्टा कैसे हो गया? बिकॉज ये ट्रांसपोज किया है ना, दैट्स वाई. एनीवे, देन फॉर्मूला व्हाट अबाउट द फिगर्स वी रिसीव्ड ऑलरेडी कैलकुलेशन, आप 20 लिख दीजिए, आगे हो गया. देन उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपली 20. इसको फर्दर और कुछ नहीं करना, यहाँ तक करके आप छोड़ दीजिए. दैट इज योर आंसर. ओके, आज पता आपको सिर्फ इन्वर्स करने के लिए कहा. अगर सेम क्वेश्चन को, अगर सेम क्वेश्चंस इफ आई ऐड समथिंग, सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो हाउ आई विल डू इट. ओके, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. देन आफ्टर दैट ये पार्ट ए है. पार्ट बी में मैंने जोड़ दिया वेरीफाई द अबव, जो अपने क्वेश्चन है, वेरीफाई द अबव क्वेश्चन दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1. ये आप वेरीफाई करो. एम में एड ऑन कर दिया तो क्या होगा, सेम जो निकला हुआ इसके साथ मैंने ए जो मैट्रिक्स है अगेन मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखना है ये सही में 1 होना चाहिए. So if we add it, same thing, just A inverse, whatever that we are getting here, then you multiply by matrix A. When you are getting a multiplex A, then you see the multiplication. After the multiplication, what are the results? You see here actually multiplication very interesting thing. कैसे किया? Now this is the thing. This is your row and this is your column. So, and this is, as per the rule is, right hand side में जो column है वो row के साथ multiplication होगा. Means in this case, suppose 1 multiplied into 2. So right, लिखने का time, at the time of writing, otherwise you can say 2 into 1. 2 into 1 is 2 divided by 21. Then 3 into 2. पहला एक रो का लेंगे और इधर का कॉलम का लेंगे. Then again row, again column. First row और first column जितना सारे हैं सब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन होते रहेगा. मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस प्लस साइन दे देंगे, प्लस प्लस. तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई किया 2 into 1, 2 divided by 21, then plus, then क्या आ जाएगा, then this one, so 3 into 2, 6 divided by 21, plus, then minus 31 and minus 1, so minus 1 and minus 31, so ultimately plus 13 divided by 21. So this part is over. Now coming to this part. This part is pertaining to second column.
So second column again is multiplication order. So 2 into 4, 2 into 2, 4 by 21 plus 3 into 3. In this case, what happened? In here in the middle first, yeah, first row remains a first row multiplied by second column. तो ये आपको आ जाएगा. Then last column into first row again. So you see in there 5 into 2, so 10 plus 1 into 3, आपको हो जाएगा 3. Then minus 13 into 1, like this. I think first one row एक बार आप देख लिया and you can do it yourself, then आपको mistake नहीं होगा. This is a very important multiplications. How to multiply row and column, that is the technique. इसमें maximum students टाइम लग जाता है, गलत कर देता है, माइनस प्लस उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा कर. So anyhow, after the calculation, now we can see it is a 1 1 1 identity matrix बन गया. So that means that is a symbol of identity matrix. That is the I3. नीचे लिखता है I3, capital I3 means it is an identity matrix. So it means that is a proof. Identity matrix, it is value is actually it is 1. If it is the value of this thing, it is 1. But otherwise, if you find out the determinant, it will come 1. That means, so A inverse into A is equal to 1. Prove हो गया, verify हो गया. So this second part last time exam में नहीं दिया है. हो सकता है आप लोगों को टाइम में आ जाए, क्या पता. So this type of questions are coming in the exam. Okay. So now let's see another thing. I think whatever I am saying, it is clear or not? When I being, you people are understanding or not? Response are not coming, na? Yes, sir. Now only few students, others just let interact. कहाँ चुक रहे हैं? If any doubtful something, Yes, sir. or shall I repeat somewhere? Anybody? सर No, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई एंड थर्ड कॉलम. करेक्ट. फर्स्ट एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रो ऐसे ही होगा. देन अगेन सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो इधर जो बनेगा वो भी सेम प्रोसेस में, इधर भी जो सेकेंड रो एंड ऑल कॉलम्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन होते रहेगा. Same process. If you go through this, thank you, sir. Then you can understand. You have to do it in your own. You practice करिए. इसको एक बार देखने के बाद, you just cover it up and do yourself. And you see you are able to do it not. When you are able to do it, you will feel yes, your confidence will be more, and you will feel happy. Okay, I can do it. Okay, simple things. Okay, thank you. Any problems? Shall I go ahead or show lot of other things are also there? Yes, sir. Some of the questions collected, I mean, it is the expected questions. So you can take it as a homework or something. You can note down, take a snapshot or the mobile. So the 3 questions are important from the matrix point of view, because this type of questions are coming in the exam. Again, I am telling you, go through the study material and see the last 5 years question pattern and you practice it. Don't stuck up in particular one unit. You cover up as early as possible all the chapters. Then only you can score more number in the exam. And I can tell you, I can assure you, 15 marks will be coming from these 3 units. Unit 1, Unit 2, and Unit 3 will get 3 questions. So 15 marks.
and very easy question are coming nowadays. So if you practice it, whatever I have given, whatever I have discussed, it is a totally, if you follow these things, you can achieve the 15 marks. Other chapters are also there. Tomorrow again, Monday again, the another chapter will come. So that I think it is sufficient. Only thing, your practice is required. So you can do it yourself. Otherwise, I can give you some clue. First of all is the grammar rules. So what about things? The QE equation is given. First of all, you have to form a matrix. First of all, you just form a matrix, and then after that, you determine the matrix determinant. Then once you get the determinant, then you make another 3 determinant, D1, D2, D3. Then you formula is about dx divided by d, dy divided by d, and dz is equal to d. So after the calculation, you can get it x value, y value, and z value. Ultimately, through this process, grammar rules, we have to identify the x value, y value, and z value. Simple thing. First, you have to construct. There is another way. You have to construct the matrix formation. Then you determine determinant. Then you identify the determinant, and another 3 determinant by the replacing of the last column of the matrices. And your second question is very simple. That is one matrix A, and then you have to find it out. These things very easy. Simply 4A, you have to multiply 4A, and you have to, A square means A into A. That means you have to take another matrix of same, and you multiply it. Then row and column wise, then whatever the things are coming, you have to find out the figures. That you can do it. And reduce matrix is given, add to the triangular form. So make it 0, 5, 6, and 7. You make it 0 by the reducing. So you can do it. All 3 things, whatever I am giving you the homework, that all 3 type of solutions I have shown you several times, and I hope you can do it. Okay, I can give you some hints. Suppose, for example, so that it will be easy to do it. This is I am giving the reducing matrix. I show you very quickly. You have to do it in triangular forms. So you make it a 0. So first, to make to 0, what I did, R2, that is second row, 5. I am targeting 5 to be 0. So R2 I have written, then R2 minus 5R, because it is a 5. So I had multiplied by 5 into R1. So, and I will get it. So first part is this. At the time of work in your home, what you will do it? First you write R2. What about the R2 is there? The 5, 3, and 8. You can write. Then 5R1, because 5R1. So 1, 2, 3, you multiply it. So 5, 10, and 15. If you multiply by 5, so it simply you just put a माइनस सिंबल. हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन करते थे बचपन में, बिल्कुल आपको इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस. देखिए जैसे 0 हो गया, दैट इज -7. दिस इज द न्यू R2. दैट्स व्हाई मैंने न्यू R2 इसका एरो खींच दिया. ए आप इधर बैठा दीजिए, आपको गलत नहीं होगा. आप इधर राइट हैंड साइड में रफ वर्क करते रहिए, एंड आप लेफ्ट हैंड साइड में भर दीजिए जैसे आप चाह. ये आपका फॉर्मेशन है, और ये आपने कैसा इसको कैलकुलेट किया. सिंपली आपने इसमें एग्जाम का टाइम भी ऐसे ही होना चाहिए, सो दैट यू कैन डू इट वेरी नाइसली. एंड एग्जामिनर भी देखेगा यार ये तो सब कुछ पता है इसको, और गलती भी नहीं होगा. यू विल गेट ए फुल मार्क्स. सो सेकेंड रो जो आपका उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया.
0 -7 फॉर्मेशन बन गया. First row and last row is first row is same. Now third row, actually third row change हुआ. Third row मैंने क्या किया, R3 -6 R1, R3 672 written, 672 आप लिख लीजिए आपने. Then 6 R1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 12 18. देखिए कैसे हुआ. 6 into 1 6, 6 2 12, 6 into 3 18. सेम थिंग आपने यहीं पर लिख लिया. देन माइनस 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 नीचे सिंबल देके माइनस कर दीजिए. So you will get a new R3. That new R3 0 -5 -16. सीधा आप यहीं पर लिख दीजिए 0 -1 -16. तो ये आपका हो गया. Based on these two applications, R2 arrow, that is the application of R2. This application किया मैंने R2 -5 R1. Second application R3 -6 R1. That means it is your new R2, new row 2, new row 2 बन गया. And it is your new R3 means new row 3 बन गया. ये आपने चेंज कर दिया. फर्स्ट रो कुछ नहीं किया. फर्स्ट रो 1 2 3 पहले जैसा था बिल्कुल सेम है. सेकेंड और थर्ड को हमने छेड़छाड़ किया. ओके, आई हैव चेंज दिस थिंग्स. सो बिकॉज व्हाई यू हैव चेंज इट, बिकॉज हमारा टारगेट है 0 बनाना. आवर अल्टीमेट एम इज टू मेक इट 0. सो दोनों साइड 0 हो गया और एक 0 चाहिए. सो -5 को somehow you have to make it 0. कैसे करें? सो R3 थर्ड रो है, इसके एप्लीकेशन करना है. सो R3 अब लिखेंगे एरो. R3 प्लस इसमें 1 है. R2 को ले लिया जाए. सो R2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस कर देंगे बिकॉज इट इज अ -5. If it is a +5, then we have to minus it, not plus, so that somehow we have to make it 0. So R2 क्या है? 0 -5, sorry, R3 है ना. So 0 -5 -16, 0 -5 -16. Then क्या किया हम लोगों ने? 5 R2. So 5 R2 हमने लिखा. Then 0 5 5 बिकॉज 5 से मल्टीप्लाई किया. 0 5 5 मल्टीप्लाई इधर लीजिए. देन प्लस करना है. प्लस सो नीचे प्लस 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 सीधा आप देखिए दैट इज -11 0 0. सो ये तो 0 ऑलरेडी है ही. सो इसको आप सीधा मैंने एरो दिया. आप न्यू इसलिए देखिए न्यू R2 R3 अगेन न्यू R3 बन गया. जितना मर्जी बार कर सकते हैं. अब सब पर्टिकुलर रो हो नहीं रहा 0. आप किसी तरह 2 बार 3 बार करके आप 0 बनाना ही है somehow. सो विच इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. हो गया. जैसे व्हेन यू आर फिनिशिंग 3 zeros योर सॉल्यूशन स्टॉप. नो प्रॉब्लम. सो विच इज दिस इज वेरी इजी. व्हेन यू प्रैक्टिस इट इज वेरी इजी. इनिशियली लगता है क्या है, हाउ टू मेक इट 0, कहाँ से माइनस करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करें. सी इट विल लिटिल बिट आपको और ही रुकेंगे, बट इट इज नॉट ए वेरी टफ जॉब. यू कैन डू इट. सो एनी हाउ आपको होमवर्क का थर्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी आई हैव शोन ऑलरेडी, बट स्टिल यू हैव टू डू इट इन योर ओन. आप प्रैक्टिस करो कैसे 0 हो रहा है. आप देखो. ठीक है. अच्छा सेकेंड का भी वो भी हम हिंट दे देते हैं. 3 इक्वेशन तक ग्रामर रूल. आपको सिंपली हैव टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन x y z 5 जो भी था फॉर्मूला में. एंड इसमें जो जहाँ पर वैल्यू नहीं है, समथिंग इज नॉट, यू कैन कंसीडर इज अ 1. यू माइंड इट. व्हेन द इक्वेशन not given means 1. अगर 2y, so okay 2y. Suppose in this case, so
where the value is not given means you can consider it as a 1. So 1, 1, 1, x, y, z. Then इधर x नहीं है, जो नहीं है वो 0. Y 1, Z 1. Because x is either y is not there. This y is not there. So 0. So I just what are the equation is given? I just construct or split up. Especially I just split up in 3 matrix. This question को मैंने तोड़ दिया. तोड़ने के बाद 1, 2, 3 matrix बना दी. This part is remain same. If you again multiply it, again आपको उसी फॉर्मेशन आ जाएगा. बाकी बेसिकली हमने इसे स्प्लिट किया, चेंज ऐसा कुछ चेंज ही नहीं किया, जस्ट ओनली इसमें बाइफरकेट किया, अलग कर दिया. बट अगेन इफ यू मल्टीप्लाई इट, सेम थिंग विल कम. राइट हैंड साइड आफ्टर इक्वल टू सेम थिंग इज रिमेन 5, 2, 3. उसको हमने एक ब्रैकेट बना के दिस इज ऑल्सो अनदर मैट्रिक्स, दिस इज अनदर मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया. दैट्स ऑल. देन सेम थिंग डिटर्मिनेंट, आपको सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है 1 और वे इसको रिप्लेस करना है. देन ax, ay, az, 3 डिटर्मिनेंट, न्यू डिटर्मिनेंट निकालना है. व्हाट वी डिड इट, सिंपली पहला फर्स्ट कॉलम चेंज किया, इधर का जो मैट्रिक्स था ये वाला 5, 2, 3 से हम रिप्लेस किया, जस्ट ओनली 5, 2, 3 रिप्लेसिंग. And then the second ay when I finding the ay, determinant of ay, second column replace किया, and az third column replace किया. जो भी हुआ then हमने उसको फॉर्मूला में डाल दिया. x is equal to ax, determine a, and this way x value is 3, y z. ये आप लोगों को अपने आप करना है, मैं जस्ट हिंट दे दिया, आपको देखा भी दिया. एक्चुअली आई शो यू सो दैट आपको कॉन्फिडेंस, यू कैन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. देन यू कैन गो थ्रू द योर कॉपी एंड डी हाउ फास्ट यू कैन डू इट. बिकॉज नाउ यू सी व्हेन यू डू इट योर ओन, डेफिनेटली इट विल बी फास्टर बिकॉज यू नो द स्टेप्स. सर ने आपको सब कुछ दिखा दिया है. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट. अब वॉच देख के आप देखो 5 मिनट के अंदर में कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एग्जाम का टाइम these things, this type of solution within a 5 minutes you have to finish it up, because there are 21 question will be there. Within a 3 hours you have to finish it up 20 questions. So all are 5 marks. So 5 into 20, 100 में एग्जाम होता है. अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे so you have to left out some of the questions. So 5 marks. So आपको क्लॉक देख के, वॉच देख के अभी भी प्रैक्टिस करना चाहिए कितना स्पीड में यू कैन एबल टू डू इट. सो आई होप इसको 5 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए. ऑलरेडी मैंने हिंट दे दिया. नाउ तीसरा जो मैंने होमवर्क दिया है, मैट्रिक्स ए दिस थिंग एंड फाइंड 4a minus a square. This is also same thing. Here a square is there, so definitely first you solution निकाल लीजिए a square का. First you find it out the a square. Same thing you repeat it and multiply it. As I told you, column, row and column multiplications. Again I can repeat some of the things so that it will be easy. 2 into 2. देखिए 2 into 2. You take it column into row. So 2 into 2 plus 3 into minus 1. Okay. So this part is over. अगर 3 रो तो अगर 3 सेकंड 3 हो जाता 3 पार्ट होता. Now this side minus 1 into 2. 2 into minus 1, 2 into minus 1. Another thing is this, you just see, you mind it carefully what I am saying you again, just carefully listen. Suppose we are considering the column into row. So what are the column first,
you write first. Then in this case 2, there is also 2, so 2 into 2. Now 3, I am writing 3 first. Otherwise -1 into 3, same thing, -1 into 3, but you have to maintain the order, which order you are writing, and then your mistake will be less. Chances of mistake will be less. So we consider मैंने फर्स्ट कलम को लिखेंगे, देन रो का फिगर लिखेंगे. कलम का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट लिखना है, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे रो का एलिमेंट से, देन आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा. ओके, हियर इज आल्सो लाइक दिस -1. सो अब -1 फर्स्ट लिखना है, देन इंटू 2, देन 2 into -1. So this way, and here is also like this. -1 into 3. देखिए -1 into 3 plus 2 into 2, 4. 2 into 4. So this is the way. Then chances of mistake will be less. अब कोई भी एक प्रैक्टिस बना लेना, जब मैं रो और रो वाइज फर्स्ट, आपको रो से आप रो चलने तो पहले रो को लिखना है. तो दिस इज योर a square निकाल गया. Once you get the a square, then 4a minus a square, 4 into these things, and a square का value these things. Again you have to multiplication. Why I am giving this thing, this example, so that you should have a practice how to multiplications. So multiplications जो है आपका practice हो जाएगा. अगर you see, I have already shown you, even though if you go in the when you start your practicing, again you will be stuck off, because mathematics is such a thing, only to see the things not sufficient. You have to do it your own. Until and unless you do yourself, you will not be, your confidence will not come. So only see solution, lot of books, lot of presentation. Apparently it seems, yeah, वो तो बहुत easy है यार, ये तो कर लेंगे. It seems to be very easy, but if you not practice it, you will be stuck off in the exam. So practice it. जितना practice करोगे आपको problem नहीं. So now another half an hour. Is there any question, any doubts? Tell me. Any doubts? It is interesting or not? If people are enjoying the math class or not? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Because sometimes it seems to be a very boring subject, because No. students are not getting interested. This is interesting subject. So if you are interested, you are not boring. So then that is my motivation, na? So okay, students are responding, students are understanding. So that way I am also motivated, na? So a response is required, interaction is required. Yes, sir. So I think around 68 students participants are showing in the things. I don't know where the others. Response is very less. Okay. I can, so most of the things I have covered. So I can show you. So let's interact more. मैं अभी आप लोगों से एक सरप्राइज, so there are some questions, MCQ type, or that way it will be revised. Okay. Now the first question, read out. इसको दिखाई दे रहे हैं questions? Yes, sir. It is visible.
Shall I make it little bigger? It is visible, sir. So Not now, an issue. first question is saying determinant is a number associated to a matrix. And second point, matrix is a number of associated to a rectangular. Determinant is a number associated to a square matrix. And D option is both A and C. So which is the correct answer? Sir, I think D. E. D was Sir, it's C. C. Okay, and others? A, Yes, sir. A, sir. I think both A and C. no, I think now it is confusion now because somebody is saying A. तो और ऑप्शन बचा क्या तो सारे ऑप्शन बोल दिया तो कोई ना कोई तो होगा दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर ना अब तो कंफर्म बताना है मेजॉरिटी बताओ इट जस्ट कंसेंसस सारे स्टूडेंट्स बताओ दिस इज द करेक्ट आंसर सारी एग्री है Sir, it's C. D is the right answer, sir. D is the right answer. D. नेम नाम D, बताओ D. हु इज टेलिंग द नेम बताओ Rehan, this side, नाम sir. बताओ D. हां नहीं कौन Anuj, sir, C. सी कौन बता रहा है बताओ Sir, it's Akash and I am. Anuj. अनुज ओके सी गुड वेरी गुड और किस किसने सी बताया C. रवीना. सी के साथ कौन कौन जाना चाहते हो ठीक है और एनीथिंग एनीबॉडी सी अब मैंने इन द स्टार्टिंग यस्टरडे आई ऑलरेडी डिस्कस द डिटरमिनेंट And So Max. determinant and matrix का different मैंने बताया था. Matrix is a array of things, and determinant is some sort of number values. It is after that some value होता है. It's some numbers. Matrix में कोई number नहीं होता. Matrix is just like a organizations. It's just like a organized some of the arrays. Okay, but in the determinant we are getting some number values. Is it now? We are getting a value, and moreover, the determinant is a square. Because it's a square matrix. So right answer is D, both A and C. D किसने बताया था? Yes, sir, Akash. Yes, sir. Rehan, this side. आकाश. D. Okay, very good. और किसने बताया? Who told? Rehan. Rehan. Okay, very good. So okay, now I think you just correct yourself. So doesn't matter. Actually, maybe the other students are not responding. Maybe they are hesitate or feeling hesitate to say something. So no problem because I'm trying to make my classes more interesting because the theory at the same time MCQ type question अगर होगा तो इसमें रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा साथ साथ तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा सो इसलिए मैंने कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको now something is given determinant. Okay, minor element of 3 उसमें कहाँ पर है एलिमेंट 3 दिखाई दे रहे minor 3 means second row last element, or we can say third row, a third column, middle third column, middle element. So, or otherwise you can say A11, A12, A13, that is A21, A22, A23. Okay. So A23 element 3 उस पोजीशन का माइनर एंड कोफैक्टर दोनों चीज दे दिया गया. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्लास किया
माइनर भी हम लोग निकाले, कोफैक्टर भी हम लोग निकाले. So I think now we guess it. Which one is the correct A. answer? सोच के बताओ. Yes, sir. It's A. C बता रहे थे 10 माइनस ए वाला C. No, sir, it's A. A, sir. A. तो A C हो गया. और B और D किसने बता दो तो सारे ऑप्शन हो जाएगा. कौन सा करेक्ट है? कोई तो एक तो करेक्ट होगा, चारों को चारों तो करेक्ट नहीं है ना. तो आप I think A is the correct A option. सोच is के the right बताओ. answer, sir. देखो 3 जो है ए एलिमेंट का निकालेंगे तो सीधा सीधा 6 3 और 9 ए लाइन तो गायब हो गए, काटो उसको. और 1 4 3 गायब हो गया, काटो इसको. एक काटने के बाद आपको ऊपर में 2 0 और 1 5 इसमें सारे खेल है. सो 2 0 1 5 इसमें से करना पड़ेगा. सो 2 0 1 5 में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करना तो 10 सीधा सीधा दिखाई दे रहे. 1 2 3 तो 10 तो कोई ना कोई जगह में होगा. अगर 10 कहाँ है? इधर भी 10 है. फर्स्ट फिगर इज माइनर, सेकेंड इज योर कोफैक्टर. फर्स्ट फिगर इज बिकॉज इट्स रियल है ना 1 2. तो फर्स्ट वन इज योर माइनर एंड सेकेंड इज कोफैक्टर. इसी ऑर्डर में है. ओ ना सॉरी मैंने गलती बताया. कोफैक्टर ऑफ 5. हाँ कोफैक्टर ऑफ 5. सो 5 जो है इसका कोफैक्टर निकालना है. तो ए सेकंड जो है वो कोफैक्टर. तो पहले तो एलिमेंट माइनर निकाल दो. तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है. तो बी और डी तो हो ही नहीं सकता है ना. सो -12 तो माइनर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे. सो बी और डी क्रॉस होना चाहिए. ए और सी का अंदर में कोई एक तो होगा क्योंकि दोनों में 10 है. अभी कैलकुलेट करना ना कोफैक्टर निकाल. अगर कोफैक्टर में क्या निकलता है? -12 आता है ना -10 आता है. जो भी होगा तो वही आंसर होगा. बोलो 5 का सेम प्रोसेस. तो 0 4 5 को उड़ा दो सीधा और 1 5 9 को उड़ा दो सीधा. उसके बाद देखो क्या Sir, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. A. It's -12, sir. A correct answer, sir. क्योंकि देखो 5 जो है ना 5 को कैंसिल कर दिया. 5 0 ए वाला लाइन पूरा गायब और 1 5 9 गायब. तो हमारा पढ़ा क्या हुआ 2a 2 1 और 6 3. इसको मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 3 into 2 6 होगी और -1 into 6 अगेन और एक दूसरा माइनस होगा. सो क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया. सो 12 तो है ही पक्का. सो -12. ओके. सो करेक्ट आंसर इज क्या निकला? A. ए. करेक्ट आंसर इज ए. और एक चीज है दिस पोजीशन क्या है? As a minus value. ये भी तो देखना है. अगर इसमें कोई रॉन्ग है तो बताना पड़ेगा ना. क्योंकि कोफैक्टर ऑफ 5 एक किस पोजीशन है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सो ऑटोमेटिकली ये माइनस में है. सो इधर माइनस की ऑलरेडी माइनस है और इधर हम लोगों ने जब जोड़ा था 3 into 2 6 माइनस और एक माइनस ऐसे ही आता है तो 6. तो प्लस इधर +12 ऑलरेडी था. तो +12 तो निकला था बट माइनस सिंबल बिकॉज दिस पोजीशन इज माइनस. सो इसलिए इट इज करेक्ट. कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन था मतलब सर ये गलत है, ये माइनस नहीं होगा 10 और 12 होना चाहिए. तो मैंने उनको जब बताया था भाई इसका यहीं पर जो माइनस कहाँ जाएगा. देन स्टूडेंट ने सोचा वो आया सर तब तो ठीक है. सो गॉट इट ना. ये मजा आ रहा है ना एमसीक्यू में और क्लियर हो रहा है ना फंडा.
Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. it will be more clear because आप लोग धीरे धीरे और मजा एमसीक्यू टाइप आगे के क्वेश्चन कुछ आएगा एग्जाम में भी होगा तो आप फटाक से कर सकते हैं. नाउ यू सी ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए. देखिए ये क्वेश्चन आप करो, ये ट्रांसपोज करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ये जो कंडीशन मैंने दिखाया ऑलरेडी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको सिर्फ ट्रांसपोज करना B है. is और the right कौन सा answer. करेक्ट है? B, sir. B. B, sir. B. डी. डी फॉर दिल्ली. No, sir. B. No, B, sir. sir. B for B. ball. अच्छा बी फॉर B, sir, ठीक है. B. तो बी आपने बता रहे हैं करेक्ट है. और कौन कौन एग्री है बी के साथ? I agree with B, sir. So I also agree with you. तो सेव रोवन कलम B, में sir. कन्वर्ट किया ना. Yes, sir. अच्छा बाकी का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? बाकी कोई स्टूडेंट्स है नहीं क्या? इतना बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना. सो एनीवे, सो दैट इज आल्सो करेक्ट फिगर, नो प्रॉब्लम. सो नाउ सी दिस वन. ये वाला बताओ, ये तो बहुत इजी है. Find the inverse of A where minus 22 is your determinant and cofactor is also given. तो A, sir. A. कौन सा वाला करेक्ट रहेगा? A. A1, sir. A is the correct answer. Option A, sir, is the correct answer. ऑप्शन ए. और एक बार ध्यान से देखो. Yes, sir. Yes, sir. एक बार ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ Yes, sir, देख रहे हैं. गड़बड़ हो रहा है ना. सर सी. Sir, C. सी होगा शायद सर. Sir, D. सी सी. Yes, sir. कौन बोल रहा है? नाम बताओ. सी किसने बोला? सर अंशुल शर्मा. क्यों अंशुल? अंशुल बताओ सी क्यों? व्हाई नॉट अदर थिंग्स? सर एक जो है इसमें ट्रांसपोज भी होगा ना. करेक्ट. तभी तो एडजॉइंट आएगा ना, क्योंकि कोफैक्टर तो हम लोग सीधा सीधा नहीं है, एडजॉइंट ए है. हमने कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट कहाँ किया है ना. एडजॉइंट करना मतलब ट्रांसपोज होना. इसमें ट्रांसपोज किया ही नहीं है. ट्रांसपोज करेंगे. अभी इसको सीधा सीधा यहीं पर लगा दिया जाए तो गड़बड़ है ना. हमने तो एडजॉइंट ए नहीं बनाया नहीं ना. सिर्फ इतना ही आपको करना है, एडजॉइंट ए आपको बनाना है, देन वो देखना है. जैसे आई थिंक अंशुल ने सही बताया. इट इज द करेक्ट आंसर सी. गॉट इट ना. अदर स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक हो रहा था समझ गए ना. Yes, sir. Yes, sir, is. Okay. So anyway, no problem. That is a small thing. I think that way you can also understand where you are now. अभी और कितना मेहनत करना है, कितना कंसेप्ट क्लियर करना है. That is actually idea. मैं ये सब दे रहा हूँ, सोच कर बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए. जी कैसे क्वेश्चन बनाना चाहिए, कैसे आपको याद रखेगा. मैथ में एमसी को बनाना बहुत मुश्किल होता है. Now another question. इसको कैसे होगा? देखो ऑप्शन, आई हैव गिवन द ऑप्शंस. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बताओ व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट. सपोज यू अंडर डिटर्मिनेंट इज ऑलरेडी गिवन 15. आपको 3 इक्वेशंस आर देयर. डिटर्मिनेंट इज ऑलरेडी देयर. ओके. एंड नाउ आपको dx निकालना है. जैसे मैंने बताया था, So cannot solve the option. dx के लिए क्या करना है, आपको हटाना है.
फर्स्ट वाला हटा के 5, 10 और जो भी है इसको वो बैठाना है ना। तो कोई ना कोई जगह में देखिए वो किया हुआ थोड़ा है। सा तो थोड़ा सा नीचे कीजिए सर। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ऑप्शन जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 25 कर देते हैं। नाउ इट इज ओके। तो आप देखिए 5, 10 और 0 तो रिप्लेस हुआ है। सो तीनों के लिए कहाँ का GX जो है फर्स्ट रो के लिए होता है, DY सॉरी फर्स्ट कॉलम के लिए होता है, DY सेकंड कॉलम के लिए होता है और DJ थर्ड कॉलम के लिए होता है। तो वही तीनों चीज आपको झटका से देखिए आप 5, 10 और 0 फर्स्ट रो में कोई सेकंड नजर कहाँ का नहीं आ दिया रहा हुआ है। Sir, can I see the option D? देखिए DX है, इसमें देखिए तुरंत देखना है 5, 10, 0 है कि नहीं, इसमें नहीं है, छोड़ो इसको। ऑप्शन डी दिखाइए ना सर। ओह अच्छा, और एक ऑप्शन नहीं दिखा है ना। डी And the ऑप्शन right है। option is the D. अच्छा D वो is छूट the गया right था ना, option, I think. इसलिए आप लोगों को। हाँ अभी ठीक है, अभी सारे Okay, sir. ऑप्शन आ गए ना। Now it's okay. तो Yes, sir. इस ऑप्शन में आपको तुरंत इसको निकालने के लिए रास्ता है 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0। सो जहाँ बदला हुआ है वो चीज कहाँ पर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ओके, आई थिंक नाउ बाकी दूसरे चैप्टर का है, वो हम लोग जब दूसरे चैप्टर हो जाएगा देन अगेन वी कैन डिस्कस द MCQs। अभी नाउ एज ऑफ दैट 5 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। सो आपको पूरे चीज को कवर अप हुआ है। सो ओके, आई थिंक और भी है मेरे पास, तो देखेंगे बाद में टुमारो। और कोई डाउट्स अगर है तो बताइए। और भी क्वेश्चंस है, छोटे छोटे है। आई थिंक इसको ना हम लोग नेक्स्ट टाइम एक बार रिवाइज करेंगे, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कोई बता सकते हैं? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर, उसका वैल्यू क्या होगा, डिटरमिनेंट उसका वैल्यू क्या होता है? 3 होगा ना 0 होगा, 9 होगा ना 27 होगा, कौन वैल्यू 0 होता है? बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो हमेशा 0 होता है। यस तो इसलिए राइट आंसर हो गया बी। ओके, Yes, इन sir. दिस केस आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना सिंपल है, बिकॉज इन दिस केस आपका एक्स वैल्यू निकालना है, बिकॉज इट इज ए आपको एक्स वैल्यू निकालना है। तो इक्वेट करके कौन सा वैल्यू होता है आप लोग ट्राई कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। और एक दिया है ए और बी फिगर आउट किया है, इसको डिटरमिनेंट ए बी क्या होगा, 460, 2000, 3000 ना -7000 क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको आराम से आ जाएगा। ए एंड बी आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली करने के बाद फिर इसको डिटरमिनेंट कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि वंस यू आर मल्टीप्लाइंग द बोथ द मैट्रिक्स ए बी, तो एक फॉर्मेशन होगा, एक मैट्रिक्स आएगा जो सिंगल वन मैट्रिक्स हो जाएगा, देन 10 मैट्रिक्स को, उसी मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। So when you are considering both the matrix multiplication, and after the multiplication you get a new matrix, and then you derive the determinant and which is the result. Okay, डी सर। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, no problem. This is also a simple thing. Then value of the x, because of the equity, 2x minus 5 is equal to 6, and minus this way you can identify which is the value, इक्वेशन करके निकालना है। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर दैट वी कैन सी। बीच बीच में एक्चुअली व्हाट आई एम
trying to do so in between हम लोग time to time we'll discuss the questions, discuss the MCQ, this type of, to get more interactions. Okay, so that will be better. अच्छा, just timing as usual, आप लोग एक स्नैपशॉट ले लेते हैं. आप आ जाइए थोड़ा टाइम के लिए, कैमरा ऑन कर लीजिए. लिया नहीं है मैंने. Wow, very good. That means you are patiently listening my class. Okay, I surprised. I thought आप लोग सब गायब हो गए होंगे. Wow, very good. So at least it seems you are very interest लगा के मैथ के क्लास कर रहे हैं. Very good, very good. because रात 10 बजे भी आप लोग मैथ क्लास कर रहे हैं, वो भी मैथ सब्जेक्ट का. So very good. I am really happy. So okay, I can take a snapshot. देखते हैं आया कि नहीं है. Just 1 minute, 1 minute. Yes, it has come, no problem. So I can save this picture. Sixth May. BCS BCAOL, no? Online. Okay, I can save it. Okay, so I think now I have to. Okay, my PC camera not working. Okay, no problem. It is just formalities only. Even though सारे फिगर तो आते नहीं है, जस्ट जितना हमारा लेआउट में 8-10 स्टूडेंट को दिखाई दे रहे हैं, इतना ही आए हैं. और बाकी ये हमारा चैट बॉक्स का ये ले लेते हैं. If any queries you can write in the chat box, because I have to go through this, because last time जिसको जो भी डाउट आया होगा आप लिख दीजिए तुरंत, जो भी आपका डाउट है. ओके, तो चैट बॉक्स भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सो दैट Sir, यस बोलो, सुन रहा हूँ, बोलिए. sir, will we get these recorded lecture? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, बट आई थिंक इग्नू आरसी रीजनल सेंटर से अपलोड करेंगे. आप लोगों को कैसे मिलेगा दैट आई डोंट नो. मे बी सम अरेंजमेंट इज देयर. We do miss that. बिकॉज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से आप मैडम से बात कर लीजिएगा, मैडम को बोलिए, किसी के मैडम से बात कर लीजिए. upload on LMS portal. आप तो किए होंगे मेरे ख्याल से ना ऑलरेडी. बिकॉज वो तो ऑटोमेटिकली गूगल मीट के थ्रू चला जाता है ना.
एनी डाउट? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो और पूछो. Okay, so another 2-3 minutes are there, so around 10. So okay, finish. I think now. अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है, nothing else, so I can close the session. Okay. So again मंडे हम लोग मिलेंगे. मंडे एक्चुअली आप लोगों को है कौन सा क्लास है? सीक्वेंस ना. मंडे आपका तो सिलेबस का है. हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन. सो मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा, so that during my class I can explain, and if you can understand the things, or very easy. There are only 1 or 2 steps are there, so 3-4 types I can show you. Though some principle are there actually. Induction mathematics in the principle of induction, there are some principles are there. 1 or 2 steps are there. There are 3 steps basically. Then I can explain you and I can show you some of the solution, and based on the question pattern, that also we can discuss. So then no problem. It is a very small chapter, but one question will come definitely. So we can go through this. This is better. So coming Saturday and Sunday, 2 दिन आप लोग थोड़ा practice कर लीजिए. What about the things we have discussed? So at least one example of solution practice कर लीजिए. Then it will be revised. So okay, I think if anything else, okay, otherwise I can close the session. Shall I close the session? Okay, I think no more question. Okay, sir. Okay, so good night. गुड नाइट Yes. सर. Good night. Good night, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू सर. Thank you. Good night. Good night. Good night.